Hello students. Uh, Today we will continue our chapter, the human reproduction, and the next topic is the female reproductive system. So the female reproductive system is the system of primary female sex organs, that is ovaries, then accessory ducts and external genitalia, which are specialized to produce ovum and its fertilization, then growth of fetus, and then further delivery of the baby. The pair of mammary glands are also the component of the female reproductive system, and they are also required for care and nourishment of the baby. Ovaries are the primary sex organs, as we discussed earlier, which produce egg or ovum and secrete hormones like estrogen and progesterone. Then the other organs are the fallopian tubes, uterus, cervix, and vagina, and these are the secondary sex organs. So first of all, we discuss about the external genitalia of the female reproductive system. So here is the picture. So we discuss one by one. So here is the you can see this portion. It consists of fatty tissues and connective tissues, and it known as mons pubis. Mons pubis. Then there you can see here there is a fold of skin, which is the skin is darker in shade, and it is known as labia majora. After this, there is another fold of skin here, which I show with a red color, is called labia minora. Okay, then where the junction of labia minora, that is here, there is an organ which I show with green color called clitoris. Okay, so clitoris is a tiny finger-like sensitive erectile structure which is present at the junction of the labia minora above the urethral opening. Here you can see this one is the opening of the urethra from where the urine is pass out. Okay, so one more thing about the clitoris is it is considered to be homologue to the penis of male because it has a glass-like structure. Secondly, it has a foreskin like prepuce and also have two columns. We can draw here. First of all, I rub all the things. Here is the clitoris, and here will be the two columns extended downward, which equivalent to the corpora cavernosa. Corpora cavernosa. As we studied earlier in the anatomy of the penis, the two dorsal spongy tissues known as corpora cavernosa, and the two columns of the clitoris which are equivalent to the corpora cavernosa. Okay, then there is the opening of the urethra, then there is the vaginal entrance. We can say it is the opening of the vagina. The opening of the vagina is covered by a very thin layer of the skin called hymen.
which is slightly torn off. There is a small hole, you can say, so that the menstrual flow can pass out through this hole. Okay, during the menses, when a female on his period on her periods in the month, then the blood flow comes through the vagina. Okay, and it passes through the small hole which is present in the hymen. Actually, hymen covers the vagina, and there is a small hole in the hymen through which the blood comes out. Okay, so this is the external genitalia of female reproductive system. So here is the anatomy, and we can say the lateral view of the female reproductive system. We discuss the organs one by one. So first is the labium majora, this one, and after that the labium minora. Here is the clitoris. Then this portion is the vagina, and this is the uterus. Okay, and here is which is I can show with the red color. This is the bladder, urinary bladder, and here is the opening of the bladder. Okay, so this is the lateral view, side view of the female reproductive system, and there is the simple diagram. Here is a simple diagram of the female reproductive system. So before discussing these organs, first of all we discuss about the ovaries, which is very important. The anatomy of the ovary is very important. So the ovaries are solid organs, and it is made up of connective tissue. The connective tissue layer is known as stroma. Okay. Further, it is wrapped by a layer of cuboidal cells called germinal epithelium. You can see here the outer layer is called the germinal epithelium, followed by a layer called visceral peritoneum. After the germinal epithelium, there is a layer called visceral peritoneum. Visceral peritoneum. So outer connective tissue layer is the stroma, उसके बाद germinal epithelium, उसके बाद peritoneum. Okay, then stroma consists of further it is divided into two parts. Here we can write stroma. It is divided into two parts. The first is the cortex, and second is the medulla. और इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं. ठीक है, तो the ovarian medulla contains many rounded and oval bodies known as Graafian follicles. Here we can see the Graafian follicles. जो medulla है, here is the medulla, central part of the ovary. medulla में क्या है? medulla में present है Graafian follicles. So each Graafian follicle contains a large ovum. Here you can say this one is the ovum. This is ovum. Contains large ovum surrounded by many layers of follicle cells. So these are the follicle cells. The follicle cells of a maturing Graafian follicle secretes estrogen. The main function is, एक तो नरिशमेंट देते हैं, सेकेंडली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एस्ट्रोजन, द फीमेल हार्मोन. देन द मोस्ट मैच्योर ओव्यूम फ्रॉम द ओवरी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द फीमेल. We can see in this diagram
this is the immature follicles. Secondly, they are moving, and by the passage of time they are maturing, and at last during the menses of the female, the most mature ovum is released by the ग्रैफिन फॉलिकल. जो सबसे ज़्यादा मैच्योर ग्रैफिन फॉलिकल होएगा वो अपना एग जो है वो रिलीज़ कर देगा ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द फीमेल. ओके, जब एक ग्रैफिन फॉलिकल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, उसमें से ओवियम निकल जाएगा, तो उसमें बहुत सारे येलो कलर जो है येलो मास या येलो सेल्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, the corpus luteum are contains yellow pigment called lutein, and they secrete progesterone. एक और हार्मोन जो है जो ये रिलीज करते हैं वो क्या है? प्रोजेस्ट्रोन. Okay, so this is the whole anatomy of the ovaries. So here is the anatomy continued. First of all, this is the structure of graphene follicle. So जो outer layer है, this layer is known as granulosa cells. Then is the basal lamella. Here is the empty space called antrum. Then there is this one is the ovum, and there is a another layer which is known as cumulus oophorus. Okay, so this is the basic structure of the graphene follicle. So here is the first point about the anatomy. It is a fully matured follicle which ruptures and discharges the ovum at the time of ovulatory phase in the menses of the female. The second point is the ovulatory phase or the ovulation refers to the time when the egg discharged from the dominant follicle or the most mature follicle within an ovary. The ovary is a pair of female glands which are the part of the female reproductive system in which the formation of eggs take place and the female hormones progesterone and estrogen are made. The egg is discharged into the fallopian tubes where it can get fertilized by the sperm. Then post ovulation the graphene follicles convert into the corpus luteum that secrete progesterone, which plays an essential role in the maintenance of the pregnancy. Okay, so these are the few points about the ovary and the graphene follicles. So next we discuss the other parts of the female reproductive system. So again I am showing this picture. So first हमने जो है ovaries को discuss कर लिया. So this one, these are the solid organs, ovaries. Okay, तो इसकी anatomy हमने पढ़ लिया अभी. तो next इसके बाद जो second जो second organ है वो है fallopian tubes. So these are the fallopian tubes. These are the fallopian tubes. So they are a pair of muscular tubes which extend from ovary of its side to the uterus. मतलब ये ovary से शुरू होती हैं fallopian tubes और this one is the uterus. तो uterus के end तक जाती हैं. The length is vary from 10 to 12 centimeters. The end near to the ovary is the funnel shaped. This end is funnel shaped and it is known as infundibulum. So this part is known as infundibulum. Infundibulum has a central pore and finger-like projections called fimbriae. This one, ये जो projections है यहाँ पे, so these are known as
fimbriae. One fimbriae is long and is close contact and has a close contact with the ovary. Fimbriae have cilia for creating a current to pass the liberated egg from the ovary to the fallopian tubes. तो बेसिक फंक्शन क्या है फिम्ब्रे का कि ओवरी में से जो मच्योर्ड एग यहाँ से निकलेगा, सपोज ये एग यहाँ से निकला ग्रेफिन फॉलिकल से, तो इसके अंदर क्या है, जो फिम्ब्रे है, ये फिम्ब्रे है, इसके अंदर क्या है, सीलिया है. Cilia is small hair-like structure which helps to move the egg into the fallopian tubes. तो ये फिंगर्स हैं, जैसे फिंगर से हम कुछ कलेक्ट करते हैं, इसी तरह से ये जो एग को कलेक्ट करके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ले जाता है. देन इन्फेंटिबुलम लीड्स इनटू अ कर्व्ड वाइडर पार्ट कॉल्ड एम्पुला. द नेक्स्ट दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला. The rest of the fallopian tube is narrow and is called isthmus. इतना पार्ट जो बाकी बचा है उसको क्या बोलते हैं, fallopian tube को isthmus. Okay. Then again, this is conical part is infundibulum. The next part, which is curved, is called ampulla. And rest of the fallopian tube is called isthmus. Okay, so this is the all the parts of fallopian tubes. So next is the uterus, this part. So uterus क्या है, uterus or we can say the womb is like an inverted pear-shaped structure. It is distensible to several times during the pregnancy. Then the uterus is supported by the ligaments and attached to the pelvic wall. There are three thick layers from which the uterus is made up. The first is perimetrium. This is the first layer. Then myometrium, and सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है, एंडोमेट्रियम. 3 लेयर्स से जो है हमारी यूट्रस ये बनी होती है. तो उसमें कौन कौन सी लेयर है, द आउटर मेम्ब्रेन इज़ द पेरीमेट्रियम, मिडल इज़ द विच इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स इज़ मायोमेट्रियम, एंड इनर विच इज़ ग्लैंडुलर, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं और स्क्रीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम. ओके. देन इसका फंक्शन क्या है, यूट्रस का फंक्शन क्या है, uterus is meant for anchoring and nourishing the fetus during the pregnancy. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जब एम्ब्रियो बनता है तो उसको नरिश भी करती है और बेबी की फॉर्मेशन भी यूट्रस में ही होती है. सो नेक्स्ट पार्ट इज द cervix, दिस वन, cervix. यूट्रस के बाद क्या आता है, cervix आता है. सो cervix इज द नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द inferior extremity of the inferior end of the uterus. It protrudes into vagina and encloses a narrow cavity called the cervical canal. This portion, ये क्या है, cervical canal. ओके. इसमें थोड़ी सी पिक्चर में गड़बड़ है, एरो इसके जो है वो थोड़े से गलत बने हुए हैं. ठीक है, तो वो यहीं पे रुक गया. एक्चुअली दिस इज द सर्विकल कैनाल. द कैविटी इज फिल्ड विद द म्यूकस. जो सर्विकल कैविटी है इज फिल्ड विद द म्यूकस. The cervix has sphincter muscles that allows it to bear the weight of the fetus and the amniotic fluid. Amniotic fluid जिसमें बेबी बाद में घूमता है, जिसके बेबी के अराउंड जो फ्लूइड होता है वो amniotic fluid होता है. And the next is the vagina. This portion, this is cervix. उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, this one is the vagina. So vagina is a muscular tube
and its length is about 10 to 12 centimeters. 8 to 10 or 10 to 12 vary from person to person, so we can say 8 to 12 centimeters. Then its function is it act as the copulatory organ. Secondly, it functions as a birth canal and passage of for the menstrual flow. तो तीन फंक्शन हो गए इसके. नंबर वन, इट इज़ अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेकेंड, जो बेबी की डिलीवरी होगी, बेबी का बर्थ होगा, वो भी कहाँ से होगा? थ्रू द वेजाइनल कैनाल. एंड इट इज़ also helps to pathway of for the menstrual flow. Then it opens over the vestibule through a distensible aperture called the vaginal office, and vaginal office is covered by a thin layer of the skin called the hymen. So this is the basic organs of the female reproductive system. Then next is the accessory glands. तो कुछ ग्लैंड्स और भी हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू ग्लैंड्स विच आर Bartholin's gland. Then is the Skene's gland. And other is the vestibular glands. और इन सभी का फंक्शन क्या है कि ये वेजाइना की इनर वॉल को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं. ठीक है, तो इनके और भी फंक्शंस हैं, उनको उस तरफ हमारा सिलेबस नहीं जा रहा है, तो हमने जस्ट उनको एक आउटर व्यू ही लेना है कि एसेसरी ग्लैंड्स हैं और इन ग्लैंड्स का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है एनाटमी का, वो है मेमरी ग्लैंड्स. Okay, so mammary glands are the milk producing modified sweat glands जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना जिससे आता है. So these are the modified sweat glands which occur inside the thoracic cavity called the breasts. A breast has a multiporous tip which is called the nipple. So here which is surrounded by a very sensitive skin or the pigmented area called the areola. Internally, each breast has 15 to 20 glandular or the mammary lobes embedded in the fatty tissue and the connective tissue. Each lobe contains a large number of multicellular alveoli, and the cells of the alveoli secrete the milk, which is stored in the lumen of the alveoli. The latter lead into the mammary tubules, and mammary tubules open into the mammary duct. A mammary duct leads through a wider tube, we can say, and known as ampulla, which is then open into the lactiferous duct. So ये सारी चीज़ को हम समझ लेते हैं कैसे होता है. तो ब्रेस्ट के अंदर लोब्स होते हैं, बहुत सारे लोब्स होते हैं. तो एक लोब ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया कि ये उसका क्या है, मेमोरी लोब है. सिंपल डायग्राम है एक. तो ये क्या है, मेमोरी लोब. मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे मल्टी सेलुलर एल्वुलाइज होते हैं. तो ये क्या है, मेमोरी एल्वुलाइज या एल्वुलस या एल्वुलाई.
ओके, तो इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद ये सारे के सारे जो एल्वुलाई होते हैं वो ओपन होते हैं एक डक्ट में, यहाँ से एक डक्ट बनती है। तो इस डक्ट को बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो बोलेंगे एम्पुला, देन इसकी बनती है डक्ट आगे, उसको बोलते हैं हम मेमरी डक्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोब्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसे सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे एक ब्रेस्ट में लोब्स हैं, ये सारी की सारी उसमें आ रही हैं मेमरी डक्ट्स जो मिल्क लेके आ रही हैं। देन दे ऑल आर ओपन इनटू निपल। यहाँ से ये डक्ट जाएंगी और सारी की सारी निपल में ओपन होगी। ठीक है, और इसके बाद जब एम्पुला होता है उसके बाद बनती है मेमरी डक्ट, और जब ये निपल की तरफ मूव करती है, निपल में पहुंच जाती है इस एरिया में, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट। तो क्लियर है। तो सो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आपने इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लेना है। तो जो डायग्राम्स हैं वो भी अच्छे से आपने ड्रॉ कर लेनी, सारी की सारी डायग्राम बनानी है। और ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।